Hello everyone, I welcome you all in today's online learning session. Today we will read a very interesting story of your English textbook, that is Birbal's Khichdi. प्यारे बच्चों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ इंग्लिश ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਦੀ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़न जा रहे हैं जिसका नाम है बीरबल्स खिचड़ी. Birbal's Khichdi. Let's get started now. Pre-reading, learning new words. Story पढ़न तो पहला आओ कुछ नवे शब्द सीखिए. The first word is glowing. 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 Glowing means shining. The next word is starving. 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 Starving means dying due to hunger. Frozen. Frozen. Frozen means turned into ice. Extreme. 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 Extreme means highest degree. Deserve. 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 Deserve means to be worthy to have. Consider. 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 Consider means to think about seriously. And the next word is warmth. 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 Warmth means a moderate degree of heat. Dear students, let us revise the words. आओ शब्दां दे अर्थ एक बार फिर देखिए. Glowing. Glowing means shining. Glowing का मतलब चमकदार. Starving. Starving means dying due to hunger. ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ. Next is frozen. Frozen means turned into ice. ਜਮਿਆ ਹੋਇਆ. Extreme. Extreme means highest degree. मतलब बहुत ज़्यादा. Next is deserve. To be worthy to have. Deserve का मतलब हकदार. The next is consider. Consider means to think about seriously. Consider का मतलब विचार करना. And the last word is warmth. Warmth means a moderate degree of heat, जिसका मतलब है निग. Dear students, let us read the story now. आओ कहानी पढ़िए. It was winter time. The ponds and lakes near Akbar's palace were all frozen. At Akbar's court, Akbar asked Birbal, "Tell me one thing, Birbal. Do you think a man will do anything for money?" Birbal replied, "Yes, Your Majesty." Akbar ordered, "All right, then prove it." It was winter time. सर्दियां दा मौसम सी. The ponds and lakes near Akbar's palace were all frozen. Akbar's palace. अकबर दे महल दे कोल जिन्ने भी तालाब ते झीलां सन वो सारे all frozen जम गए सन. At Akbar's court, अकबर दे दरबार विच अकबर ने बीरबल नूं पुछया, बीरबल tell me one thing. बीरबल मैनू एक गल दस. Do you think a man will do anything for money? कि तैनू लगदा है कि कोई इंसान पैसे वास्ते कुछ भी कर सकता है?
बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिता, यस योर मैजेस्टी, जी हाँ महाराज। अकबर ऑर्डर्ड, ऑल राइट देन प्रूव इट। अकबर ने आदेश दिता, ठीक है फिर सिद्ध करके दिखा कि कोई इंसान पैसे ਲਈ कुछ भी कर सकता है। The next day, Birbal came to the court along with the Brahmin. He was extremely poor and his family was starving. He had no money to feed them. Birbal said to the king, "This Brahmin is ready to do anything for the sake of money." Akbar asked, "Will he do what I say?" "Anything if I get some money to feed my family," said the poor Brahmin before Birbal could reply. The king said to the Brahmin, "Stand inside the frozen pond all through the night without any clothes and I will give you 2000 gold coins." Next day, अगले दिन बीरबल came to the court दरबार पैलेस। बीरबल दरबार विच आया along with the Brahmin, एक ब्राह्मण नाल लैके आया जो कि बहुत एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा गरीब सी एंड हिज फैमिली वॉज स्टार्विंग, और ਉਹਦੀ फैमिली भुख नाल तड़फदी सी, भुख नाल मर रही सी, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਸਨ। He had no money to feed them. ब्राह्मण ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। बीरबल said to the king, ਹੁਣ बीरबल ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "This Brahmin is ready to do anything for the sake of money." ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਕਬਰ asked, ਅਕਬਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "Will he do what I say?" ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੀ ਇਹ ਕਰੇਗਾ? ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ बीरबल ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, "Anything if I get some money to feed my family." ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਲਈ। The king said to the Brahmin, ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? Stand inside the frozen pond. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਲਾਬ ਹੈ ਜੋ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਜੰਮ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਜਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ all through the night, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੜਾ ਰਹਿ without any clothes, ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਾਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 2000 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਤੇ ਤਾਲਾਬ ਜਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਸ ਪੂਅਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਠੰਡੇ ਜਮੇ ਹੋਏ ਤਾਲਾਬ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ 2000 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। The poor Brahmin needed the money. ਉਸ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। He had no choice. He stood in the frozen pond all through the night. ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਮੇ ਹੋਏ ਤਾਲਾਬ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, shivering, ਕੰਬਦਾ ਰਿਹਾ। In the morning, he returned to Akbar's court. ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ to receive his reward of 2000 gold coins, ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸਨੂੰ 2000 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਸਕੇ। The king asked the Brahmin, ਰਾਜਾ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, How could you stand in the frozen pond in such an extreme temperature? ਤੂੰ ਉਸ ਜਮੇ ਹੋਏ ਤਾਲਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਸਕਿਆ? ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? The innocent Brahmin replied, I could see faintly glowing lights of the palace a mile away, and
That was a ray of hope for me. I kept looking at the lights and thinking about my family, that they will get food if I continue to stand in the pond. Innocent Brahmin, ਮਾਸੂਮ ब्राह्मण, जिस दा बिल्कुल ही दिल साफ सी, replied, उसने जवाब दिता, I could see faintly glowing lights of the palace a mile away. महाराज, मैनू थोड़े महल दियां हल्कियां हल्कियां जगदियां रोशनियां दिखदियां सी. And that was a ray of hope for me. और वो मेरे ਲਈ उम्मीद दी किरण वांग सी. I kept looking at the lights. मैं उस रोशनी वाल नू देखदा रहा. And thinking, और सोचदा रहा about my family, मेरे परिवार बारे. की सोचदा रहा? That they will get food if I continue to stand in the pond. कि अगर मैं इसे तालाब विच इसे तरह खड़ा रहा ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ. ਤੇ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ. Akbar suddenly became very stern. He said harshly, "Oh Brahmin, you have cheated me. I will not give any reward for this. You looked at the palace lights and got warmth from the lights. You do not deserve the reward." अकबर एकदम सडनली बहुत ही सख्त हो गया और दा लहजा बहुत सख्त हो गया. He said harshly, उसने बड़े गुस्से नाल कहा, "ओ ब्राह्मण, you have cheated me. हे ब्राह्मण, तू मैनू धोखा दिता है. I will not give any reward for this. मैं इस ਲਈ कोई इनाम तैनू नहीं दवांगा. क्यों? You looked at the palace lights, क्योंकि तू मेरे महल दियां रोशनियां नू देखदा रहा. And got warmth from the lights, और उन्हां तो तैनू गर्मी मिलदी रही, निग मिलदा रहा. You do not deserve the reward. तू किसी भी इनाम दे लायक नहीं है, किसी भी इनाम दा हकदार नहीं है, क्योंकि तैनू ठंड विच खड़े रहण नू कहा गया सी, लेकिन तू मेरे महल दियां रोशनियां तो निग लिता है, वामथ मिली है तैनू, इसलिए कोई भी इनाम नहीं मिलेगा. बीरबल सैड, हुण बीरबल बोलदा है, योर मैजेस्टी, महाराज, इट इज़ इम्पॉसिबल to get the warmth from the lights glowing so far away. महाराज, यह तां असंभव है, इम्पॉसिबल है कि महल दियां रोशनियां जो कि इन्नी दूर जगदियां सन, उन्हां तो किसे नू किसे किस्म दी गर्मी मिले. अकबर डिड नॉट लिसन टू हिम. अकबर उसदी कोई गल वल ध्यान नहीं दिंदा. अकबर नू सिर्फ एक गल दा पता है कि ब्राह्मण ने उसनू चीट कीता. हाउ कुड द पुअर ब्राह्मण आर्ग्यू विद द एम्परर? ही रिटर्नड डिसअपॉइंटेड एंड बेयर हैंडेड फ्रॉम अकबर्स कोर्ट. द नेक्स्ट डे बीरबल डिड नॉट गो टू अकबर्स कोर्ट. ही सेंट अ मैसेंजर टू द एम्परर saying that he would come to the court only after his khichdi gets cooked. Birbal did not turn up even after 5 days. ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ. ਅਗਲੇ ਦਿਨ नेक्स्ट डे बीरबल डिड नॉट गो टू अकबर्स कोर्ट. बीरबल भी अकबर के दरबार विच हाजिर नहीं होया. ही सेंट अ मैसेंजर. उसने एक दूत भेज दिता अकबर कोल, जिसनू कहलवाया कि वह अपने घर खिचड़ी पका रहा है. जदों खिचड़ी पक जाएगी उदों वह दरबार विच हाजिर हो जाएगा. बीरबल डिड नॉट टर्न अप इवन आफ्टर 5 days.
5 दिन हो गए बीरबल दरबार विच हाजिर नहीं होया। The emperor himself went to Birbal's house to see what he was doing. He saw that Birbal had lit the fire and kept the pot of uncooked khichdi 1 yard above the fire. Akbar said, Birbal, I considered you to be the wisest in this country, but you have proved me wrong. Birbal said, Why, Your Majesty? Akbar said, How will the khichdi get cooked when it is 1 yard above the fire? What is wrong with you, Birbal? ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੀਰਬਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਖੁਦ ਦ ਐਮਪਰਰ ਹਿਮਸੈਲਫ ਅਕਬਰ ਖੁਦ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੀ ਸੌ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ that Birbal had lit the fire कि बीरबल ने ज़मीन ते अग बाली हुई है and kept the pot of uncooked खिचड़ी और उस भांडे विच जिस विच ओह खिचड़ी पका रहा है ओह अग तो 1 यार्ड लगभग 3 फुट 1 यार्ड उपर लग्या होया है। प्यारे बच्चों तुसी तस्वीर विच देख सकते हो अग ज़मीन ते बल रही है और खिचड़ी का पॉट 1 यार्ड के करीब अग तो उपर है। अकबर सैड हुण अकबर नूं गुस्सा आ गया वो की कहंदे है बीरबल आई कंसीडर्ड यू टू बी द वाइजेस्ट इन दिस कंट्री मैं समझदा सी कि तू पूरे देश का सब तो बुद्धिमान इंसान है बट यू हैव प्रूवड मी रॉन्ग पर तू तो मैनू गलत साबित कर दिता। बीरबल सैड बीरबल कहंदा वाई योर मैजेस्टी क्यों महाराज। अकबर सैड अकबर कहंदा हाउ विल द खिचड़ी गेट कुकड when it is 1 yard above the fire ਇਹ खिचड़ी पक्केगी किवें ਇਹ ਤਾਂ 1 यार्ड अग तो दूर है। what is wrong with you बीरबल बीरबल तैनू होया की है। बीरबल kept stirring the pot and replied बीरबल भांडे विच कड़छी मारदा रहिंदा है और जवाब दिंदा है ओ माय ग्रेट एम्परर when it is possible for a person to receive warmth from a faintly glowing lights a mile away then it should be possible for this khichdi which is just a yard above the fire to get cooked। महाराज when it is possible अगर ये हो सकता है कि थोड़े महल दियां रोशनियां जो कि 1 मील दूर जगदियां सन उन्हां तो किसी इंसान नूं निग मिल सकता है तो यह खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती जो कि सिर्फ 1 यार्ड लगभग 3 फुट ही दूर है अग तो ये भी पक जाएगी। अकबर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक अकबर नूं अपनी गलती का एहसास होया। ही कॉल्ड द पुअर ब्राह्मण एंड गेव हिम 2000 गोल्ड कॉइन्स उसने उस पुअर ब्राह्मण नूं दोबारा बुलाया ते उसनूं उसदा बनदा इनाम 2000 सोने दियां मोहरां दे दित्तियां। अकबर वॉज हैप्पी दैट बीरबल हैड हेल्प्ड हिम टू रियलाइज हिज मिस्टेक अकबर खुश सी कि बीरबल ने उसनूं उसदी गलती का एहसास करवाउण विच मदद कीती। प्यारे बच्चों तस्वीर विच तुसी देख सकते हो कि पुअर ब्राह्मण नूं अपनियां 2000 सोने दियां मोहरां मिल चुकियां हैं। प्यारे बच्चों मैनूं उम्मीद है तुहानूं कहानी बहुत पसंद आई होवेगी। नाउ लेट अस डू सम पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़। Vocabulary expansion. Look at the word uncooked. This word can be broken like un plus cook plus ed.
Here un, un is a prefix to cook and ed is a suffix. प्यारे बच्चों, uncooked word ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ un plus cook plus ed, तो ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ cook, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ un ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ed, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਸਮ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕ them. A prefix comes before the main word. Prefix main word ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ and change the meaning of the word, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ word ਦਾ meaning ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ prefix ਕਿਹੜੇ ਹਨ? un, im, in, ir, ill। ਇਹ ਜਦ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ not। re, ਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗੇਨ, ਦੁਬਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੀ। ਮਿਸ, MIS, ਮਿਸ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ wrongly। DED, ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਿਵਰਸ। CO, ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟੂਗੈਦਰ। ਡਿਸ ਔਰ ਡਾਈ, ਜਿਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੂ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਈ ਸਿਲੇਬਲ, 2 syllables। So there are some examples of these prefixes like nonsense, unhappy, non plus sense, un plus happy, un ਤੇ non ਦੋਨਾਂ ਦਾ meaning not ਆਉਂਦਾ ਹੈ। revisit, ਦੁਬਾਰਾ। misunderstand, deactivate, coexist, dislike। Now what is a suffix? A suffix added to the end of a word. They are used to show the part of speech of a word. Suffix ਜੋ word ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ part of speech ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ part of speech ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Here are a few suffix like ER, OR, ਜਿਵੇਂ teacher, faster। ER, OR ਇਹਨਾਂ ਦਾ meaning ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ one who। Next is able, IBLE, able, capable of being, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ। reversible, reverse ਹੋਣ ਲਾਇਕ। DED, ed, forming past tense, ਜਿਵੇਂ loved, cooked, asked। ING, ing, ਜਿਹੜੇ ਕਿ gerund form ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ singing, dancing, cooking। ਇਹ present participle ਵੀ form ਕਰਦੇ ਹਨ। MENT, meant, ਜਿਹੜੇ ਕਿ forming noun, ਜਿਹੜੇ noun form ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ government, engagement। IVE, eve, ਜਿਹੜੇ ਕਿ having the quality of, ਜਿਹਦਾ meaning ਆਉਂਦਾ ਹੈ having the quality of, for example creative। Let us break some words and try to understand about prefix and suffix. Like the first word is frozen, root is froze and the suffix en। Second is return, here re prefix and turn is the word। Extremely, extreme is the word and ly is suffix। Disappointed, dis prefix, appoint, root, ed, that is suffix। Shivering, shiver is the word and ing is suffix। Wisest, wise is the word and st is suffix। Realize, real is the word and ise is suffix। Looking, look is the word and ing is suffix। Next is who said to whom। Stand inside the frozen pond all through the night without any clothes and I will give you 2000 gold coins। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? Let us know this।
stand inside the frozen pond all through the night without any clothes and I will give you 2000 gold coins. Akbar to Brahmin. Akbar ने ब्राह्मण ਨੂੰ ਇਹ words कहे. How could you stand in the frozen pond in such an extreme temperature? Akbar to Brahmin. ਅਕਬਰ ਨੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਰੋਜ਼ਨ ਪੌਂਡ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ? Oh Brahmin, you have cheated me. Of course, Akbar to Brahmin. Your Majesty, it is impossible to get the warmth from the lights glowing so far away. Birbal to Akbar. And the last one, Birbal, I considered you to be the wisest in this country, but you have proved me wrong. This is Akbar to Birbal. Dear students, there are some questions from the story. Let us try to answer these. What time of the year was it in the story? साल दा यह केड़ा समा सी जिस दी यह कहानी है? प्यारे बच्चों, पहली ही लाइन विच आंसर सी इट वॉज विंटर टाइम. सो इट वॉज विंटर सीजन, सर्दी का मौसम सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट हैड हैपन्ड टू द पॉन्ड्स एंड लेक्स? पॉन्ड्स ते लेक्स नू की होया सी? दे वर ऑल फ्रोजन, सब जमे हुए सन. वॉट डिड अकबर वॉन्ट टू नो? अकबर की जानना चाहता सी? He wanted to know whether a man would do anything for money. क्या इंसान कुछ भी करेगा पैसे लिए? What did the Brahmin accept Akbar's challenge? Why did the Brahmin accept Akbar's challenge? अकबर दा challenge ब्राह्मण ने क्यों accept किया? He was extremely poor, बहुत गरीब सी. His family was starving. ਉਹਦੀ family ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਸੀ. He was in the dire need of money. ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ. How much money did Akbar agree to give to the Brahmin? Akbar Brahmin ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? He agreed to give 2000 gold coins to the Brahmin. 2000 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ. What do you understand about Birbal in the story? Write 3 to 4 sentences on Birbal. ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੀਰਬਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ? Birbal was a minister in Akbar's court. He was the wisest of all. He had a kind and sympathetic heart. He made Akbar realize his mistake by playing a practical trick upon him. Dear students, let us complete the following sentences from the story. The ponds and lakes near Akbar's palace were all frozen. The next day, Birbal came to the court along with the Brahmin. He stood in the frozen pond all through the night, shivering. He returned disappointed and barehanded from Akbar's court. The emperor himself went to Birbal's house to see what he was doing. He called the poor Brahmin and gave him 2000 gold coins. I considered you to be the wisest in this country. Dear students, this is a time for your home assignment. There are 3 questions for you to be answered. How did Birbal turn tables to Akbar? Birbal ने पासा किमें पलटिया जिस नाल के पुअर ब्राह्मण ਨੂੰ justice मिलिया, न्याय मिलिया. What did Akbar see when he reached Birbal's house? ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? And the next is, how far was the pot of uncooked khichdi kept from the fire? Uncooked khichdi ਦਾ ਜੋ pot ਸੀ ਉਹ ਅੱਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸੀ? Let us read once again. How did Birbal turn tables to Akbar?
बीरबल ने अकबर वल पासा किवें पलटिया ते पुअर ब्राह्मण नूं जस्टिस न्याय किवें दवाया। सैकेंड इज वॉट डिड अकबर सी वैन ही रीच बीरबल्स हाउस। अकबर ने की वेख्या जदों वह बीरबल दे घर पहुंचे। एंड द थर्ड इज हाउ फार वॉज द पॉट ऑफ अनकुक्ड खिचड़ी कैप्ट फ्रॉम द फायर। अनकुक्ड खिचड़ी उसका भांडा अग तो किन्नी दूर सी। प्यारे बच्चों, इन्हां सब दे जवाब थानू थोड़े लैसन विचों मिल जाएंगे। ट्राई टू डू योर होम असाइनमेंट बाय योरसेल्फ। Dear students, I hope you enjoy the story and you very well understand that one should not do injustice with anyone. This is a presentation presented by Narinder Kaur, working as English mistress at Government High School Brahman Majra, District Fatehgarh Sahib, Punjab. It is an initiative taken by Department of School Education, Punjab. Thank you. Have a wonderful day.